everyone, good afternoon. Welcome to all of you ADA 247 Odia family. तो आज आमर टॉपिक ऑफ डिस्कशन कहा उपरे ना B.ED एग्जाम रो टीचिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड किछ क्वेश्चन सिलेबस पई डिस्कशन करबा जानिबा एवं बुझिबा पई चेष्टा करबा समस्त को प्रणाम एंड गुड आफ्टरनून प्रणाम एवरीवन. तो समस्त जल्दी जल्दी जॉइन हो जाओ आमे हमर सेशन स्टार्ट करबा. गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून. जय श्री जगन्नाथ सुरेशनाथ. तो आज फर्स्ट क्वेश्चन. A teacher noticed a student repeatedly struggling to solve complex word problems in mathematics. Mathematics रे complex word problem solve करिया पई teacher difficult feel करूछंदी. According to the socio-constructivist approach, गोटे socio-constructivist approach अनुसारे to problem solving, what is the most appropriate and immediate action for the teacher to take? कोउटा हबा पिले? सी समस्ते देलेनी. मु तते सबुदिन पाई वाशरूम को पठे दोछि जा कुछ भी. बी एंड सी भीतर कंफ्यूजन. ओके समस्त आंसर देबा को चेष्टा करो. मु तापरे आंसर कहूछि कोन हबो. गुड आफ्टरनून. से पचारि कौन ना जने टीचर नोटिस करुछंदी गोटे स्टूडेंट रिपीटेडली स्ट्रगल करछि कोन टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स रे जहा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अछि सही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पई ताको स्ट्रगल होउछि. ओके अकॉर्डिंग टू ए सोशियो-कंस्ट्रक्टिविस्ट आमे जानि छे सोशियो-कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा थ्योरी ना भाइगर्स्की का थ्योरी अप्रोच. सही अप्रोच अनुसार टू प्रॉब्लम सॉल्विंग तांका मतरे प्रॉब्लम सॉल्विंग ता व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इमीडिएट एक्शन कोटा गोटे मोस्ट इमीडिएट एक्शन फॉर द टीचर टू टेक. टीचर कोन टेक करि परिबे. जस्मिन पचारिले यानी अरे किए गोटे सब क्लास रे डेली आसी लिखुची जल्दी कहतु मो वाशरूम जीवी तो सही ताकू ही हाइड करूथली. ताकू एते वाशरूम लागुची से डेली आसछु कहूची जल्दी कहतु मो वाशरूम जीवी. अरे भाई तू आगुआ जाई कि कोन माने वाशरूम सारी के आसीनु कि ना तते मते देखिले वाशरूम नहीं लागुची ना मो क्वेश्चन देखिले तते वाशरूम लागुची. तो सही बलिया किछि थान एमते बिजार छुआ जा पई किछि ऑप्शन नाही. टीचर किछि करि परबेनी कि छुआ माने किछि करि परबेनी. ताको इच्छा हुए पाठ पढ़िया को नुआ सब यूट्यूब चैनल ले जाए कि मागणा तो मिलुची आम टे बुली चली पवन खाई मजा मसलिस करी आसबू. तो फास्ट कौन देला प्रोवाइड द करेक्ट फार्मूला एंड डेमोन्स्ट्रेट द सॉल्यूशन ऑन द ब्रॉड स्टेप बाय स्टेप. तो एटा तो हबनी तमे डायरेक्ट फार्मूलाटा केमती कहि देबो अब देन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देबो. ताले कोन एटा तो टीचर सेंटर्ड हे गला कंस्ट्रक्टिविज्म एथिरे आसिला कुआडू. ओके then होची second ask targeted guiding question to help the students identify the immediate next step in their reasoning problems. तांको targeted guiding question पचारिबो जोटा कि तांकर प्रॉब्लम रे पहुंचीबा को हेल्प करिवो. somehow correct. then कोन ना assign the student an easier set of rote calculation problems to build their confidence first.
रोट कैलकुलेशन देला सब बेले जे सी कहूच सी टा को देखिकी कहूच तो सेठी देछि रोट कैलकुलेशन माने कोन तमे घोसी घोसी करी जो जिनसटा गोटे कैलकुलेशन फार्मूला मन रखिबो एठी तुमको सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म दउ किबा कॉग्निटिव दउ किबा जहा भी दउ कंस्ट्रक्टिविज्म माने कोन तमे केबे घोसी की रट्टा मारी की मन रखिबा नुह कंस्ट्रक्टिविज्म माने नुह आमे रट्टा मारी की गोटे जिनस मन रखिबा ऑप्शन सी रे कोन देछि असाइन द स्टूडेंट एन इजियर सेट ऑफ रोट कैलकुलेशन जोथरे आमे जो रोट मेमोराइजेशन माध्यम रे कैलकुलेशन को मन रखिया प्रॉब्लम्स टू बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस फास्ट घोसी घोसी के मन रखि देले जते बेले हमको इजियर लागे तो सेते बेले आमे कोन करबा ना से जिंसटा को मन रखि पारिबा देन लास्ट वन pair the student with a high achieving peer and instruct the peer to explain the final answer socio constructivism माने नुहा आमे छुआ मानन को peer करी के रखिबा रोट देखिनी मो सुबासिस ओके तो पेयर करके रखिबा ओ जे हाईली इंटेलिजेंट हेतिबा से लोअर इंटेलिजेंट पिला को बुझे परनो दैट डज नॉट मीन बट एठी को है जे सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म रे जो भाइगर्स के कहि छथि कोन ना हमें कहि जे स्कैफोल्डिंग कथा स्कैफोल्डिंग ओके सी हमको सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म कथा पचार छी जेते बेले छुआटा रिपीटेडली माने किछि टाइम पई से गोटे मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करबे पई प्रॉब्लम क्रिएट करूची ताले सेठी हमरा इमीडिएट एक्शन कोन ना हमें ताको किछि गोटे असिस्टेंट प्रोवाइड करिया जे मोर नॉलेजेबल पर्सन जे भी क्लासमेट हो टीचर हो एडमिनिस्ट्रेटर होंदो आमे जे ताठारो मोर नॉलेजेबल पर्सन आमे कोन करबा ना ताको किछि असिस्टेंट प्रोवाइड करबा सो दैट कोन हबो तारा बेटर हे परबा एठी कोन देछि हेल्प स्कैफोल्डिंग माने कोन गोटे टेम्पोररी हेल्प से जिनसटा को एक्सेल करबा पर्यंत आमे ताको सहाय्य करबा तो ताको कोन करबा ना टारगेटेड एवं गाइडिंग क्वेश्चन पचारिबा जोटा से स्टूडेंट को हेल्प होबो टू आइडेंटिफाई द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप टू देयर रीजनिंग प्रोसेस से जो सॉल्व करूची तारा नेक्स्ट स्टेप को सेटा सॉल्व करिया पई हेल्पफुल होबो तो एठी करेक्ट आंसर कोन ना ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर बुझियला क्लियर समस्त ना किसी डाउट रहिला नेक्स्ट बात द्वितीय नंबर क्वेश्चन ना ड्यूरिंग ए ग्रुप प्रोजेक्ट जेते बेले गोटे ग्रुप प्रोजेक्ट काम चली छी कोन ना स्टूडेंट्स रीच एन इम्पास बिकॉज देयर इनिशियल हाइपोथेसिस फेल्ड द टीचर एनकरेज देम टू यूटिलाइज द मीन्स एंड एनालिसिस strategy what does this cognitive strategy entail ए जो means and analysis strategy टीचर ताको कहिले करिया पई एटा कोन मीनिंग करूची ओके now brainstorming as many unconventional hypotheses as possible without evaluating their immediate practicality now option B breaking the ultimate project goal into smaller manageable sub goals and systematically resolving the gap between the current state and each sub goal now option C working entirely backward from the final desired presentation to the initial problem state next kono na applying a guaranteed algorithmic formula to ensure they arrive at the strictly correct scientific conclusion B समस्त कहलेनी ड्यूरिंग ए ग्रुप प्रोजेक्ट स्टूडेंट रीच एन इम्पास बिकॉज देयर इनिशियल हाइपोथेसिस फेल्ड हाइपोथेसिस माने ताले कोन करे पिले समस्त बी देई देला मु मानुची हाइपोथेसिस कोन व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस कहले हमें कोन बुझू बी कहूच ताले हाइपोथेसिस को तार हाइपोथेसिस फेल हैला ना हाइपोथेसिस माने कोन जल्दी जल्दी आंसर दिया व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस गोटे थ्योरी ये मा सुभाषिस हाइपोथेसिस थ्योरी लिखिबे
इमेजिन समथिंग ओके तथ्य ओके मैम मो कमेंट शो करछि आपनकु ना मते कार कमेंट शो करूनी काहे ना मु अंध हो जाई छी तो हाइपोथेसिस माने हो जे कोन ना हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम तो आमे एपर्यंत फाइनल सॉल्यूशन पाई नाही जेते बेले आमे कहूचे हाइपोथेसिस सेते बेले कोन होचे ना आमे जेते बेले गोटे प्रॉब्लम करबा को जाउछु सेते बेले आमे प्रॉब्लम रो कोनोसी आगो पछ सॉल्यूशन कोन हम आमे जानिनु से कोन होची ना आमे अज्यूम करूछु प्रॉब्लम टाको सॉल्व करबा पई मु ऑब्जेक्टिव फिक्स करबा आगरु मु भाबुची कि धर मु गोटे एग्जांपल नेबी तो सी कौन ना मु कौन पछ करके रिप्लाईटा दे थांती कमेंट तो एमती घुरु घुरु पलाऊँच मुझे जो पछ करी मो रिप्लाईटा केमती देवे से कहले मो डाउट पचारे आप रिप्लाई देले तो छाड़ शुण टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम केमिति ना फॉर सपोज मु गोटे मैथमेटिकल प्रॉब्लम धरी किंबा गोटे सब्जेक्ट जेमति कि आमे कहि परिबा छुआटे स्कूल को आसुनी एटा गोटे हमर जनरल प्रॉब्लम एज ए टीचर तो आमे गोटे टेंटेटिव सॉल्यूशन आमे जानिने छुआटे स्कूल को काहे के रेगुलरली आसु नाही टीचर हिसाब रे जानि नाही तो सेते बेले आमे कोन करबा आमे कहि परिबा मे भी ता घरे कोन गोटे इशू हेची से आसीनी एटा गोटे टेंटेटिव सॉल्यूशन मे भी ता पाखरे पैसा नहीं से इकोनॉमिकल बैरियर लगे स्कूल आसी पारुनी मे भी ता देह खराब होता है से स्कूल आसी पारुनी तो बैरियर्स कजेस तो एटा गोटे टेंटेटिव सॉल्यूशन एटा गोटे फाइनल सॉल्यूशन नुह किंबा आमे फाइनल सॉल्यूशन कहि परिबा नाही तो सी कोन करे छी ना गोटे ग्रुप प्रोजेक्ट टाइम रे स्टूडेंट कोन करे छी ना से फेल हे जाय छी बा टिके कंफ्यूजन हे जाय छी बिकॉज़ तार इनिशियल हाइपोथेसिस से जोडा नै थिला टेंटेटिव सॉल्यूशन से हाइपोथेसिस ता तार रिजल्ट पाइबा पई फेल हे जाय छी then teacher encourage them to utilize means and analysis strategy what does this cognitive strategy entail ताले जो means and strategy माने कोन means माने कोन समझते इतरु बुझी पारु छ आमे जतले means कहू माने हमर जोटा स्टार्टिंग पॉइंट जोटा आमे बेसिक रु पूरा फंडा रु आरंभ करबा एंड एनालिसिस माने कोन आमे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आड़ को जिबा जो जिनस सिंपल सिंपल आमे फास्ट स्पेसिफिक रु जनरल को जिबा डायरेक्ट जनरल रु स्पेसिफिक जिबा नाही तो स्पेसिफिक जिनस जो फैक्ट रहिला जो डाटा रहिला से डाटा कलेक्ट करके आमे मीन्स बा आम स्टार्टिंग पॉइंट रु आम एंडिंग पॉइंट जाए पहुंचबा तो ताहले से ऑप्शन ने कौन कहिला ना ऑप्शन ने कहिला ब्रेनस्टॉर्मिंग एज मेनी अनकन्वेंशनल हाइपोथेसिस as possible without evaluating their immediate practicability सेमते किछि अनकन्वेंशनल हाइपोथेसिस ब्रेनस्टॉर्मिंग बोली हमें कहि परिबा नाही देन सेकंड वन कोन ब्रेकिंग द अल्टीमेट प्रोजेक्ट से गोटे प्रोजेक्ट करूचे से प्रोजेक्ट टाको हमें ब्रेकिंग कले गोल इनटू स्मॉलर छोटो छोटो पार्ट रे मैनेजेबल सब गोल्स किछि किछि छोटो छोटो सब गोल कले एंड सिस्टमैटिकली रिजॉल्विंग द गैप बिटवीन द करंट स्टेट एंड इज सब गोल वर्तमान रे हमर स्टेटमेंट कोन बाहर छि एवं सब गोल रो स्टेटमेंट को हमें बाहर कले एवं सेही जिंसटा को हमें एनालिसिस करबा को लागिले ओके ठीक अछि थर्ड वन working entirely backward from the final desired presentation to the initial problem state no आमे डायरेक्ट बैकवर्ड रही कि स्टार्ट करिबा बैकवर्ड रहिबा माने कोन मीन्स एंड एनालिसिस आमे बैकवर्ड रही कि जहा गोटे प्रोजेक्ट रही छि सेही प्रोजेक्ट रा प्रॉब्लम स्टेटमेंट टा को आमे एनालिसिस करबा को चेष्टा करबा सेया नुह देन कोन ना लास्ट वन अप्लाइंग ए गारंटेड एल्गोरिथम फार्मूला टू एंश्योर दे अराइव एट द स्ट्रिक्टली करेक्ट साइंटिफिक कंक्लूजन गोटे गारंटेड फार्मूला केवल पुट कर दबा सेटा होची मीन्स एंड आमे तो जो थरे फार्मूला पुट करबा सेही थरे आंसर बाहरिबो तो सेटा मध्य हबो नाही तो राइट आंसर कोन जोटा हमर बुझौची मीन्स एंड एनालिसिस को ना ऑप्शन बी that is breaking the ultimate project goal into smaller and sub goals and try करिबा कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अछि सेही स्टेटमेंट सहित सब गोल रो आंसर गुडा को हमें कंपेराइज करी कि कोन करिबा ना कंपेयर करिबा और आंसर टा को बाहर करिबा तो मीन्स रु माने आरंभ रु छोटो छोटो सब पार्ट रे हमें ताको डिवाइड करी कि एनालिसिस रु हमें सिंथेसिस आड़ को गति करिबा ओके नेक्स्ट
Third number question. A student needs to draw a perfect circle for an art integration project but cannot find a compass. They fail to realize they could simply trace the bottom of their cylindrical water bottle. This student is currently exhibiting which cognitive barrier to problem solving? Confirmation bias, representative heuristic, functional fixedness, na cognitive dissonance. तीन नंबर डी समस्ते जानिचे तो ना सुभाषिष भाई कहले बोली 3 नंबर डी हाउ जने कहले बी ओके जाओ केते संख्या रे बी आउ डी आछी देखिबा समस्ते आंसर दे सारा डी कंफर्म ओके डी कंफर्म हाउ हाउ मु भी कहूँ डी कंफर्म समस्ते आंसर दे सारा तब कंफर्म करिया समस्ते आंसर दियो ए हबा ना बी हबा ना सी हबा ना डी हबा आउ थरे भाबी के आंसर दियो तम मन को टाइम देली आउ गोटे मिनिट भाबी के आंसर दियो बी हबा ना सी हबा ना ए हो विशाल कहले ओके ठीक अच्छी जाओ विशाल गोटे सी कहले गोटे बी आसुची दुईटा तीनटा चारटा बी आसिलानी ताहले को जल्दी एते पिला अच्छो 90 जन पिला अच्छो सेशन को कई ना लाइक करिवार अछि ना कई कमेंट दबार अछि डी केते जन कहउछ डी रे केते जन डी रे जाउछ केते जन सी रे जाउछ प्रमिला एंड विशाल कहलेनी सी एबे आसला सी ताना ओके सी से सी कहले सी गले हेरी ताको वेरी गुड कहली बोले तुम माने सी कह देलो ना कोन सी आंसर सी आंसर सी ओके तो से क्वेश्चन कौन पचार देखो से पचार स्टूडेंट्स नीड्स टू ड्रॉ ए परफेक्ट सर्कल फॉर एन आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट बट कैन नॉट फाइंड कंपास तो आमे जो कंपास रे बुले के एमते रखे कि गोलटा बुले थाउ ना तो सी कौन ना तर आर्ट इंटीग्रेशन ने ताको कंपास टा बुलेबार अछि बट दे फेल टू रियलाइज दे कुड नॉट सिंपली ट्रेस द बॉटम ऑफ देयर सिलिंड्रिकल वाटर बोतल किंतु से फेल हो जाउची रियलाइज कर जाउची जदी कंपास नाही ताहाले मध्ये तार जो सिलिंड्रिकल वाटर बोतल तळ पार्टटा अछि से सेइथरे भी गोल बुलेई परिबा बट से जिंसटा सेइ सहित कनेक्ट करि पारु नाही तार बैरियर आसुची से कोन ना जानि पारु नाही कि से कोन करिवो कोन न करिवो सेइथरे कले हबो ना हबो सेइ जिंसटा त माइंड को आसी पारु नाही दिस स्टूडेंट कौन is currently exhibiting which cognitive barrier to problem solving confirmation bias से confirm करि पारुनी ना सेकंड है representative heuristic से representation करि पारुनी ना functional fixedness ना cognitive dissonance तो एठी जिंसटा होउची स्टूडेंट को होउची ना only thinks of compass for drawing a circle से रियलाइज करि पारुनी बोतल रो बेस रे हमें कोन करि परिबा ना सर्कल मध्य ड्रॉ करि परिबा ता माने सेटा कोन शो करूची रिजिड थिंकिंग जो थरे के सी कोनोसी जिंसटा फ्लेक्सिबिलिटी कोन जानि पारुनी कंफर्मेशन बायस माने कोन फोकसिंग ओनली इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट एग्जिस्टिंग बिलीफ केवल गोटे जिंस ऊपर वन जिंस ऊपर फोकस करबा जोटा हमर एग्जिस्टिंग बिलीफ ऊपर अछि मोर जोटा बिलीफ पैटर्न सहित फोकस करूची कंफर्मेशन बायस माने मु कोन करूची केवल गोटे जिंस ऊपर फोकस करूची जोटा मोर एग्जिस्टिंग बिलीफ सहित ही रहूची रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक माने कोन जजिंग बेस्ड ऑन सिमिलरिटी और स्टेरियोटाइप जजिंग
बेस्ड ऑन सिमिलरिटी आमे सेही जिंस को जज करूचे जो थिरे सिमिलरिटी अछि जदि सिमिलरिटी थांदा कोन सेही जो कंपास आ से जो सिलिंड्रिकल बोतल लो बेस पार्टटा जदि एठी सेम थांदा ताले से जज करि परथंदा बा ता माइंड को आस्तांदा रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक कन्फर्मेशन बायस माने केवल गोटे जिंस ऊपर से कोन फोकस करूची गोटे इन्फॉर्मेशन जोटा सपोर्ट करूची एग्जिस्टिंग बिलीफ को गोटे इन्फॉर्मेशन को ही से फोकस करूची ये कोन कला जो थिरे सिमिलरिटी अछि हमें ताकू बिलीव कले ताले कॉग्निटिव डिसोनेंस माने कोन ना मेंटल डिस्कम्फर्ट एटा हमर आसिला कॉग्निटिव डिसोनेंस माने हला हमर कोन मेंटल डिस्कम्फर्ट ओके हमर आसिला मेंटल डिस्कम्फर्ट तो जो माने ऑप्शन सी कहिथिला हां कैसा मजाक है ऑप्शन सी करेक्ट फंक्शनल फिक्स्डनेस ओके ऑप्शन सी करेक्ट मैम आज गूगल ले सर्च कले बेस्ट करंट अफेयर टीचर फॉर ओडिशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपन को फोटो देखैला मैम पिले रे डेली डेली काहेंगे मोर मजाक उड़ौछ मो मजाक उड़ेवा को तुमको मिलुची छाड़ो उड़ाओ तो काहेंगे एटा हला ताले कि फंक्शनल फिक्सनेस कोन एटा गोटे कॉग्निटिव बैरियर जो थिरे गोटे पर्सन बा सिंगल इंडिविजुअल अनेबल हेइ थाए गोटे ऑब्जेक्ट को देखि के फिक्स करिया पई डिफरेंट वे रे से गोटे सिंगल ऑब्जेक्ट को देखिबो ताकू डिफरेंट वे रे फिक्स्ड करिया पई से अनेबल हबो एटा होची कॉग्निटिव बैरियर फंक्शनल फिक्सनेस माने मु गोटे सिंगल जिंस को देखिली किंतु तार जो डिफरेंट वे रा यूज मु खाली देखु छी कि मो पाखरे गोटे बोतल अछि किंतु मु बुझी पारुनी कि से बोतल रा सरफेस एरिया बा बेस एरिया रे मु गोटे कोन करि परिबी ना गोटे सर्कल मध्ये बनै परिबी मो पाखरे कंपास नथिले नै मु करि परिबी तो सेथि लागि होची फंक्शनल फिटनेस ओके बुझियला क्लियर काहे के ऑप्शन सी हबो सुभाषिस रा भूल हे गला किछि नै जानी था कांसेप्ट गुडा केबे भी काम रे आसीबो कोन से सिचुएशन ने आ एठी हमें डेली YouTube रे करूछे भूल हले किछि प्रॉब्लम नै ओके नेक्स्ट ना टू स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली डिस्टर्ब द क्लासरूम एनवायरनमेंट बाय आर्गुइंग ओवर शेयर्ड रिसोर्सेस तो शेयर्ड रिसोर्सेस विषय से माने आर्गु करूछन्ते एवं कोन ना से माने कोन क्लास रे डिस्टर्बेंस क्रिएट करूछन्ते ओके The teacher decide to approach this as a collaborative problem solving opportunity rather than a disciplinary issue. तो टीचर ए जिंसटा को कोन करूछन्ते अप्रोच ना एटा गोटे कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग अपॉर्चुनिटी हिसाब रे ना कि गोटे डिसिप्लिनरी सिस्टम हिसाब रे व्हिच सीक्वेंस ऑफ एक्शन रिप्रेजेंट द मोस्ट इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटजी कोटा बेस्ट पेडागोजिकल स्ट्रेटजी हिसाब रे रिफ्लेक्ट करूछि अरे बाप रे मु तो क्वेश्चन पढ़ी सारनी मो छुआ माने आंसर कहि सालेनी वेरी गुड समस्ते आंसर दबा को ठीक चेष्टा करो B. Absolutely, Kona. Now, identify the core, complete, facilitate a structured dialogue where both express their needs and guide them to co-create binding behavioral agreement. Option B is the correct answer. Kona. Now, identify करिबे ना core complete. दिजन जाक जो agreement लागू छंदी, तांकर core conflict कौन? तो तांको facilitate करिबे गोटे structured dialogue बा
सेही भली वर्ड द्वारा जोटा कि सेमानकर ए कॉन्फ्लिक्ट को दूर करबा पई हेल्पफुल होबा जहा फले से माने एक्सप्रेस करिवे तांकर एक्चुअल नीड कोन अछि एवं नीड बेस्ड टीचर कोन करिवे सेमान को गाइड करिवे कोऑपरेट करिवे गोटे बिहेवियरल एग्रीमेंट वे रे ओके। Next, 5 number. In a strictly problem-based learning (PBL) environment, the role of the teacher shifts fundamentally from an information dispenser to a cognitive coach. Which of the following best describes the teacher's primary functions in the facilitating students' problem solving? कौन होगा? Yes, उर्वशी डेली क्लास होची 12 बेले। बी अरे डी किए गोटे देइदिला तम माने कोन बी देलानी सी किए गोटे देला ओ वाओ नाइस ब्यूटीफुल। Yes, option B is the correct answer. ना कौन करिवे modeling metacognitive thinking and consistently promoting students to reflect on the effectiveness of their own investigate process. कौन ना गोटे strictly problem solving learning environment the role of the teacher to shift fundamentally from an information dispenser to cognitive coach. जेतेबेले आमे cognitive coach कथा आसी जाउचे केवल गोटे information dispenser बा information transfer नुह गोटे cognitive system तो कौन ना सेते बेले कौन करबा दरकार टीचर्स प्राइमरी फंक्शन कौन ना मॉडलिंग मेटाकॉग्निटिव थिंकिंग तांगा थिंकिंग ऊपर आहुरी केमती थिंक करि परबे एंड कंसिस्टेंटली प्रमोटिंग स्टूडेंट मानन को प्रमोट करबे टू रिफ्लेक्ट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर ओन इन्वेस्टिगेट प्रोसेस से माने जो इन्वेस्टिगेट करूछंती त सेही जिंसडा एमिति क्वेश्चन आसिले मु उठी के आंसर देबी वाओ बहुत बढ़िया रेखाराणी डाउटी की भी आंसर दियो कि आंसर देके परीक्षा पास करिवार अछि। अरे भाई क्वेश्चन एते बड़ हेले प्रॉब्लम क्वेश्चन छोट हेले प्रॉब्लम क्वेश्चन लंबा हेले प्रॉब्लम क्वेश्चन शॉर्ट हेले प्रॉब्लम। भाई तुमको सब कथारे प्रॉब्लम क्वेश्चन बड़ हेले प्रॉब्लम क्वेश्चन छोट हेले प्रॉब्लम लंबा आंसर हेले प्रॉब्लम ऑल ऑफ द अबव हेले गवर्नमेंट ऑप्शन रे प्रॉब्लम किए कहि दउचे लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन। हां नेक्स्ट है कौन 6 नंबर ए टीचर डिजाइनिंग ए करिकुलम बेस्ड ऑन जॉन ड्यूई's pragmatic philosophy wants to enhance students problem solving skill. Which approach aligns best with Dewey's concept of reflective inquiry? को concept Dewey का reflective inquiry सहित connected रही छी ओके। सैटरडे रे तो क्लास होउछि अंजलि सैटरडे रे क्लास होउछि प्रीवियस सैटरडे मो देह खराब लागी मु लीव रे थिली सो दैट प्रीवियस सैटरडे क्लास हेई नाही ओके किंतु आमर सैटरडे भी क्लास होउछि मंडे रु सैटरडे जाए 12 जाए क्लास होउछि। ऑप्शन ए प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विथ एब्स्ट्रैक्ट context free logic puzzles to sharpen their deductive reasoning before applying it on real life. कोड हवा आंसर 6 नंबर ए लिख लेनी सुभाषिष ओके।
ए क्वेश्चन एका बुझी पारुनी मैम बरमपुरिया की ए हबो मैम से कौन पचार क्वेश्चन देखो फास्ट कि ए टीचर डिजाइनिंग ए करिकुलम बेस्ड ऑन जॉन ड्यूईज प्रैग्मैटिक फिलोसफी। तो जॉन ड्यूई आमे समस्त जानिछे से प्रैग्मैटिज्म विषय कहिसंती। प्रैग्मैटिक फिलोसफी कहले आमे जॉन ड्यूई को जानू कि वर्तमान प्रोग्रेसिव एजुकेशन बा हैंड्स ऑन एक्टिविटीज माध्यम रे आमे लर्निंग बाय डूइंग मेथड रे आगो को पढ़िबा। वांट्स टू एनहांस स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जोटा रे कि कोन ना स्टूडेंट्स मानकर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल केमिति से माने लर्निंग बाय डूइंग मेथड रे लाइफ रो डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करबे से जिनसडा आमे कहि परिबा। तो व्हिच अप्रोच अलाइन्स बेस्ट विथ ड्यूईज कांसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी। तो जॉन ड्यूई जो तांकर कांसेप्ट रे प्रैग्मैटिक फिलोसफी रे कहचंती रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी से रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी सहित को कांसेप्ट मैच करूची। ओके एबे सब जिनस एनालिसिस करबा और तापर देखिबा को कांसेप्ट फास्ट देला से कोन ना प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विथ एब्स्ट्रैक्ट context free logic puzzles to sharpen their deductive reasoning before applying it real life। आमे real life रे apply करिया अगुरु छुआ को abstract concept दबा context free logic puzzles दबा पुनी sharpen their knowledge। तो एठी गोटे जिंस रहला abstract मने रखि थाओ तमे जेतेबेले छोट छोट छुआ को दोउछ कि किछि करिबा को दोउछ abstract model reasoning डायरेक्ट दे दबो कंक्रीट एग्जांपल भी ना कंटेक्स्ट फ्री लॉजिक पजल्स दे दबो कंटेक्स्ट सहित कोनसी मैच करू नथबो तमे कंटेक्स्ट फ्री लॉजिक मॉडल दे दबो जोथरे रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी करिया पे। ओके ठीक अछि तमे जदी ए कहूछो आमे ए को भी थरी कि जिबा बी को चलो ना डेमोन्स्ट्रेटिंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू सॉल्व ए स्टैंडर्ड फिजिक्स इक्वेशन एंड हैविंग स्टूडेंट्स रेप्लिकेट द प्रोसेस। तो डेमोन्स्ट्रेट कर दबा एवं सेटा तांको रेप्लिकेट करबा पई से स्टेप सहज हबा पई सॉल्व कर दे कि तांको देखाई दबा कि सेही प्रोसेसटा से सही अनुसार करिवे ताटा होची रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी। जदी हमें करि देले आन छुआ सेही जिंसटा को देखि देखि हमकु रिपीट करले सेही जिंसटा कोन हे जबा रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी नो। तापरे आसिला रिलाइंग स्ट्रिक्टली ऑन हिस्टोरिकल केस स्टडीज टू शो हाउ ग्रेट थिंकर्स सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन पास्ट विदाउट एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो आमे एठी कहिचे कि कोन ना रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी माने कोन आमे हिस्टोरिकल बेस छुआ को केवल देखाई दबा कि एटा हिस्टोरिकल बेस होउची एवं कोन एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन किछि करिबा दरकार नहीं आराम से हम प्रॉब्लम सॉल्व हो जबो नो। देन आसला कोन ना हैविंग स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करंट इश्यूज विद इन देयर लोकल कम्युनिटी गैदर डाटा पर्पज ए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एंड टेस्ट इट्स वायबिलिटी माने कोन तार केते सत्यासत्य अछि। तो छुआ माने डाटा कलेक्ट करि देले एक नंबर को आसा एंड ऑप्शन डी को आसा। ओके उर्वशी मैम क्वेश्चन ओडिया रे आछि कि नो बीएड एग्जाम रे तो ओडिया रे आसु नाही। तो देखो सी कहला प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विथ एब्स्ट्रैक्ट कंटेक्स्ट फ्री लॉजिक पजल्स टू शार्पन देयर डिडक्टिव रीजनिंग बिफोर अप्लाइंग टू रियल लाइफ। तो रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी माने कोन कि आमे रिफ्लेक्टिवली थिंक करके से जिंसटा केते ठीक अछि भूल अछि केते एनालिसिस करके जो जिंसटा आमे जानिबा। तो आमे एनालिसिस करिबा माने नुह कि आमे तांको एब्स्ट्रैक्ट जिंस केवल प्रोवाइड करि दबा आ कंटेक्स्ट फ्री आमे जते बेले कोनोसी गोटे जिंस हमर एजुकेशनल एनवायरनमेंट रे दोउचे प्रैग्मैटिक सिचुएशन रे आमे कोचे प्रॉब्लम सॉल्विंग करिबा सेही प्रॉब्लम ता हमर रियल लाइफ सहित कनेक्टेड थिले माने हमर पास्ट लाइफ सहित जोथरे आमे किछि कंक्रीट एग्जांपल पाइबा आमे कंक्रीट एग्जांपल रो ही इंक्वायरी करिबा जोथरे थिंक करि परिबा हमर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हमर मेटाकॉग्निशन स्किल डेवलप होबो। तो एटी कंटेक्स्ट फ्री लॉजिक पजल्स हमरा आसीबो नाही। लास्ट कहला हैविंग स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई ए करंट इश्यूज आमे गोटे करंट इश्यूज आइडेंटिफाई कले तापरे कोन ना विद इन द लोकल कम्युनिटी निज लोकल कम्युनिटी भितरे गैदर कले डाटा प्रपोज ए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आमे गोटे तार प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बाहर करि देले ऑलरेडी डाटा कलेक्ट करके आमे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर देले लास्ट कोन एंड टेस्ट इट्स वायबिलिटी। तो आमे जेतेबेले वायबिलिटी टेस्ट करूचे देखो आमे जेतेबेले कोनोसी गोटे आंसर कहि दोउचे किंबा पाठ पढि दोउचे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग माने कोन भाबो जदि आमे रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग कथा कहूचे माने कोन आमे जहा जहा करिचे सेटा केते दूर ठीक केते दूर भूल कोठी लैक रहिला कोठी आउट के बेटर हेई पारि थांदा कि आमे जते के बेटर करिचे ताठो आहुरी बेटर केमिति करि परिबा आमे जतेबेले भाबुचे सेमिति इंक्वायरी टाइम रे जतेबेले छुआ सेही जिंस सॉल्यूशन बाहर करि सारिबा परे पुनी तार वायबिलिटी टेस्ट करि पई चेष्टा करूची सेतेबेले से तार रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी प्रोसेस को यूज करूची। तो एठी 6 नंबर राइट आंसर हबो
ऑप्शन डी. ओके क्लियर. देन 7 नंबर देखा. In the context of Jean Piaget's theory of cognitive development, a student encounters a problem that cannot be solved using their current contextual framework like schema. This state of cognitive conflict is essential for learning and it is known as assimilation, zone of proximal development, negative reinforcement, disequilibrium. Okay. राइट आंसर होची वेरी गुड ऑप्शन डी दैट इज डिसइक्विलिब्रियम. कौन ना पियाजेट का कंटेक्स्ट थ्योरी स्टूडेंट जेते बेले गोटे प्रॉब्लम एनकाउंटर करूची एवं सॉल्व करि पाउनी तार करंट स्कीमा आमे जानि छे समस्त भितर किछि मेंटल स्ट्रक्चर बा स्कीमा बाय बात अछि. दिस स्टेट ऑफ कॉग्निटिव कंप्लीट जेते बेले कॉग्निटिव कंप्लीट हुए एसेंशियल फॉर लर्निंग एंड इट इज नोन एज डिसइक्विलिब्रियम. तो कॉग्निटिव कंफ्लिक्ट को आमे जेते बैलेंस कर दोचे एसिमिलेशन एवं अकोमोडेशन माने कोन हमर एक्जिस्टिंग स्कीमा सहित हमर प्रीवियस नॉलेज सहित न्यू नॉलेज को एड ऑन करके डायरेक्ट मॉडिफाई करबा बा चेंज करबा बा न्यू नॉलेज को एडजस्ट करके एक्वायर करबा जेते बेले ए सब जिंस रे बैलेंस मेंटेन हे जाउचे आमे ताऊ कोन कहूचे ना इक्विलिब्रियम. किंतु जेते बेले बैलेंस मेंटेन हे पानी मिसमैच हे जाउची सेते बेले पियाजेट का कांसेप्ट अनुसार आमे ताको कहूचे कोन ना डिसइक्विलिब्रियम. ओके नेक्स्ट 8 number, when teaching problem solving through the lens of Vygotsky's socio-cultural theory, a teacher utilizes scaffolding. Which scenario represents the most effective use of scaffolding? मते लागुची आज 10टा क्वेश्चन ने क्लास टा को सारिया को पड़िवा. आज गला आ 10टा क्वेश्चन आगु कहीं जा 8 नंबर चलचे 10 नंबर सारू 10 नंबर रे क्लास को एंड ही करबा. 12:41 बाजलानी गोटे रे क्लास सरबा. हमर केत नंबर क्वेश्चन चल जे 8 नंबर. मु जदी जानि थांती मु कष्ट करके क्वेश्चंस बनै न थांती. Yes, scaffolding माने temporary support and option C is the correct answer. Breaking a complex research task into smaller phases, providing sentence starters for the first phase and gradually requiring students to structure their own arguments in a late phases. Okay. Next kona, a student in a mathematics class relies on a heuristic rather than an algorithm to solve a complex geometry problem. What is the primary characteristics of the student's approach? ये सत्य पद्मा मु डेली क्लास करूची. डेली ठीक 12टा बेले क्लास होची. सी ओके. बाबा 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 हाँ सी कहीं हम. A student in a mathematics class relies on heuristic rather than algorithm to solve a complex geometric problem. Okay, what is the primary characteristics of the student's approach? They are deliberately choosing the longest possible method to demonstrate thoroughness to the teacher. No. B होची तम मानकर C होची correct answer. Okay. They are employing a mental shortcut or rule of thumb that is efficient but does not guarantee a correct answer.
ओके तापरे कौन हबो दे आर यूजिंग ए स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला दैट guarantees a correct solution if that executed flawlessly तम माने कोच सी हबो ओके सी कहिला गोटे स्टूडेंट मैथमेटिक्स क्लास रे कौन करछि ह्यूरिस्टिक रादर दैन एन एल्गोरिथम आमे बेसिकली मैथमेटिक्स क्लास रे कौन करू एल्गोरिथम प्रॉब्लम बा एल्गोरिथम सॉल्यूशन यूज करू हमर कोनोसी गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करबा पाए काहे कि ना हमको एल्गोरिथम रो सॉल्यूशन बा जो एल्गोरिथम फार्मूला अछि सेही फार्मूला हमको हेल्पफुल हुए किंतु आमे सेही फार्मूला बदले कौन यूज कले ना ह्यूरिस्टिक मेथड से बचेलेनी कि एठी ताले ह्यूरिस्टिक कौन जदि तुम माने ह्यूरिस्टिक कौन जानि न ताले तमे एठी यूज कलो काहे कि जे ऑप्शन सी ठीक हबो बोली ह्यूरिस्टिक होची क्विक एंड प्रैक्टिकल वे थिंकिंग मेक डिसीजन और सॉल्व स्पेशली प्रॉब्लम जोटा कि तमे शॉर्टकट भाबे कि प्रैक्टिकली जल्दी सॉल्व करबा पई गोटे सिचुएशन को चूज करि थाओ यस ऑप्शन बी एटी करेक्ट हबो ना कोन दे आर एम्प्लॉयिंग ए मेंटल शॉर्टकट फार्मूला ह्यूरिस्टिक माने होची गोटे शॉर्टकट मेथड रूल टू थंब मेथड जोटा कि रूल डायरेक्ट आमे थंब को पळेबा एफिशिएंट बट डज नॉट गारंटी करेक्ट आंसर जोठी आमे एल्गोरिथम माने जो सॉल्यूशन यूज करिने बा फार्मूला यूज करिने सेठी हमें शॉर्टकट मेथड यूज करिसे कोन ना मु भाबुची कि मु हिस्टोरिकल एविडेंस कलेक्ट करिया को चाहूची मो जिबारा थिला कोन मु जदी कहूची अशोक का विषय रे क्लास कोन ना देखो चोर मु चाहूची अशोक विषय डाटा कलेक्ट करिया पई मु कहबे कि मु एबे गले अशोक विषय धौली मु भल से डाटा कलेक्ट करि परिबी बट मु कोन कहबी ना ना मो घर पाखरे गोटे म्यूजियम अछि त मु कोन करबी मु से त मु कोन करबी मो घर पाखरे गोटे म्यूजियम अछि मु से म्यूजियम को पळे मो घर पाखरे जो म्यूजियम अछि मु से म्यूजियम को पळेबी सेही म्यूजियम रे असंकर सब मूर्ति हेरका अछि फोटो हेरका अछि डाटा गुडा अछि मते कोन जिबार अछि से धौलीगिरी आ मु सेठू कोन पाइबी ओके तो सेइथिरे कोन अछि मु जते बेले जाउची कोन करूची ना मु जते बेले धौली जाउची पिले सेते बेले मते फास्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलबो मु जानिची मु बही रे अशोक विषय पढलिली माने से जो धौली ठारे से दयानदी ठारे मु प्रॉपर दयानदी को देखि परिबी मु धौली को देखि परिबी बट मु कोन कली ना ना मोर धौली के एते बाट जिवो मो घर पाखरे तो गोटे म्यूजियम अछि मु गले हेरी कोन असंग विषय पाई परबिनी किंतु कोन गारंटी अछि कि सेई जो तमे जिबा अप्रोच ता ह्यूरिस्टिक अप्रोच शॉर्टकट मेथड फॉलो कला कि मु कोठी के गले पाई जिबी मु धौली जिबिनी मु एठी गले पाई जिबी तमे फास्ट हैंड इंफॉर्मेशन ता सेठी केमती पाइबो सेटार गारंटी में भी अछि तमे पाइबो देन न पाइबे परिबो ओके सेही तो कहूची सी कहला कि आमे एल्गोरिथम जो एल्गोरिथम मेथड जेमति कि a + b रा होल स्क्वायर तमे यूज न करी कि तमे कहबो मु गोटे ह्यूरिस्टिक बा a + b रा होल स्क्वायर मु एते लॉन्ग मेथड यूज करिवे नाही मु शॉर्टकट रे जाई कि केमिति ए आंसर टा पाइबा पई चेष्टा करबी तो तमे जो शॉर्टकट मेथड यूज करूचो जोटा कि गोटे एल्गोरिथम बाहरे गोटे ह्यूरिस्टिक मेथड यूज करूचो तो सेही जिंसटा मे बी और मे नॉट बी तमको करेक्ट आंसर देई पारे ओके नेक्स्ट आसला 10 नंबर टू फोस्टर मेटाकॉग्निशन ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज से स्टूडेंट अप्रोच कथा ही मु कहूची सिबा सेते बेलठू किंतु मु ह्यूरिस्टिक रो एग्जांपल देबा पई सेटा बुझौथली हाँ डज नॉट गारंटी ही हबो से जेमती पचारिले कि कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री प्रॉब्लम व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट दे आर एम्प्लॉयिंग ए मेंटल शॉर्टकट रूल टू थंब दैट इज एफिशिएंट किंतु से माने जानि नाहंते स्टूडेंट माने गारंटी नाही से माने देई परिबेनी से माने जो माने शॉर्टकट फार्मूला टा यूज करूछन्ते सेटा करेक्ट आंसर कि नै गोटे छुआ केमती जानिबो तब माने एते बड़ हे गलनी बोली तब माने कहूछ हां शॉर्टकट फार्मूला अछि जो
बस जेतेबेले आमे न्यूली एज अ स्टूडेंट जदि मो हाई स्कूल लेवल अच्छी मु किछ गोटे शॉर्टकट फार्मूला नउछि मो अप्रोच कोन मु जल्दी जाई के सेठी पहुंच जिबि किंतु मते जणा नाही मो आंसर तार गारंटी देई परिबिनी सेटा केते करेक्ट नाही 10 नंबर टू फोस्टर मेटाकॉग्निशन ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज व्हिच इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी वुड बी मोस्ट इफेक्टिव ओके बी ठीक अछि very good. Option B, that is requiring student to write brief reflection on why they choose a specific strategy, where they encounter difficulties and how they adjusted their approach. Okay. Next, 11 number answer there. A teacher wants to design an assessment that evaluates a student's problem solving processes rather than just the final product. Which of the following assessment tool is most appropriate for this goal? D. देखो सेटा तमर मिस्टेक मु सीधा कहबी जे भल भाब खराब भाब बड़ ऑप्शन छोट ऑप्शन देखिबा ठीक मारिबा ठीक न मारिबा इट्स डिपेंड अपॉन यू तमे कौन पाठ पढ़ी न तुमको किए कहे बड़ ऑप्शन देखी एग्जाम रे जे तुमको क्वेश्चन टा करूची तमे ना कौन कहूछ कि तमे ऑल ऑफ द एबव दे देले आम माइंड ऑल ऑफ द एबव को जाउची तमे ऑल ऑफ द एबव वाला एते क्वेश्चन दियनी तमे जेते पारछ ऑल ऑफ द एबव वाला क्वेश्चन को अवॉइड कर तमे सेमती कहूछ कि जदि कोटा गोटे लॉन्ग आंसर न हेले तम माने कंफ्यूजिंग केमिति हबो तम माने कंफ्यूजिंग न हे कि से जिंसटा को न बुझिले तमरा क्लैरिफिकेशन कोन हबो मु आ पर बहुत शॉर्ट अछि तमे शॉर्ट देखिबो कि टीचर सेंटर लर्निंग रे टीचर कोन थांदी टीचर एक्टिव थांदी टीचर सेंट्रलाइज थांदी तो आराम से तमे कहि दबो जो क्वेश्चन गुडा हमें सब बेले डिस्कशन करूछे बट एई क्वेश्चन ही जाना पड़िबो तमे डीपली केते बुझिछो बा केते न बुझिछो yes 11 number D now an analytical rubric used to alongside a performance task evaluating distinct phases such as identifying the problem planning and say planning the execution okay next 12 number Jerome Bruner advocated for discovery learning in a classroom implementing this approach for scientific problem solving the teacher primary role is to kon kariba darkar now step away entirely and allow students unstructured free play with scientific equipment without any specific learning objective केवल scientific equipment use करिवे without any learning objective now option B provide students with raw data materials and anomalous phenomena guiding them to identify patterns and formulate their own principle now ensure that students memorize the periodic table only and core formulas as a prerequisite to any problem solving activity now D deliver clear structured lectures that explicitly state the specific principle before any experiment are conducted कौन हबो very good बहुत बढ़िया option B provide students with raw data materials and anomalous phenomena guiding them to identify patterns and formulate their own principle discovery learning माने से माने निजे निजर प्रिंसिपल को काढिबे निजे निजर प्रिंसिपल को डेवलप करेबे गोटे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रे आसीगला तमरा छोटो क्वेश्चन द मेन एम ऑफ टीचिंग इज टू कंप्लीट द सिलेबस प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग ना कंट्रोल स्टूडेंट्स
ना facilitate meaningful learning. Okay. Next, effective classroom management mainly depends on strict punishment, teachers communication and planning, silence in the class, giving homework. तो गोटे क्लास रो इफेक्टिवनेस जाना पड़े टीचर कर कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग, टीचर एम्पैथेटिक और नॉट, टीचर मेनली एम्पैथेटिक हबा दरकार, तांकर कम्युनिकेशन टा एम्पैथेटिक व्यू पॉइंट शो करूथबा दरकार. ओके. नेक्स्ट बा कोन ना टीचर यूजेस एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ व्हाइल टीचिंग, दिस रिफ्लेक्ट रोट लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, मैकेनिकल लर्निंग, मेमोराइजेशन. B. Meaningful learning. Next, if students are bored in class, the teacher should continue the lecture, change teaching method, punish them, stop teaching. Change the teaching method. Next, now if many students fail in a test, the teacher should first blame student, change the question paper, review teaching methods, ignore results. तो obviously से कौन करिबा ना निजर टीचिंग मेथड टाको रिव्यू करिबा. जदि फेल गोटे टेस्ट रे होछनी ता माने हमर टीचिंग रे कोठ ना कोठी प्रॉब्लम रही छी. नेक्स्ट, which factor is most important in teaching learning process? Teacher student interaction. से माने केते एक्टिवली एंगेज होछनी, केते डिस्कस करछनी, तांका इंटरैक्शन ता केते बेटर अछि. ओके. नेक्स्ट, लास्ट, which factor affects learning the most? ना motivation of the learners. Learners जेते मोटिवेटेड थिबो लर्निंग ता सेते बेस्ट हेई पारिबो. ओके. सॉरी फॉर सेइंग, मु तुमको कहिबारे जदि मते भूल हो थाए आज्ञा माने क्षमा करिवे कि सबु बड़ ऑप्शन गुडा का करेक्ट आंसर नुह. ताले इटी क्लासरूम डेकोरेशन जो जाय अछि, मोटिवेशन ऑफ लर्नर सेही जाय अछि. तमे गोटे काम गलनी, क्लासरूम डेकोरेशन रा ठीक मार देलनी, तम तो करि थांतो. आ जति भी काहाकू लागुछि मु डायरेक्टली कहूछि कि तम माननकू लागुछि कि क्वेश्चन फ्रूटफुल नुह, तो फास्ट जाओ जो माने बीएड एंट्रांस पाई प्रिपेयर होछ, प्रीवियस रो बीएड क्वेश्चन देखि दियो. आ जदि बेसी खराब लागुछि ताले गोटे काम करो, तुम टोटली मो क्लास देखोनी, मु मानि दउछि मते पाठ पढे आसेनी. ओके. तम माने बहुत पंडित हैला एमती सॉरी फॉर इंटरप्टिंग कहि के एते भद्रमीर सहित कहवा दरकार नै. किए कहबो देखो तमे बड़ ऑप्शन भाबुछ ताले मु कोन लेटर गणी गणी आनिबी, जोडा छोट ऑप्शन थिबो सेटा ही आंसर थिबो बोली. बेस्ट हेले आलू, बेस्ट नहले आलू, किए टमाटो फोपाड़िबो, किए पचा अंडा फोपाड़िबो, मु ही कमेंट देखुची, मु हेली पागल. कौन ना which quality helps a teacher to handle diverse learners? Flexibility, rigidity, strictness, authority. कोटा तो ये 20 टा क्वेश्चन 20 नंबर पर एंड करवा. 30 टा क्वेश्चंस अछि. मु पीडीएफ गुडा को पठाइबा को भूली जाई छी, तो जहां पे पीडीएफ क्लासेस रहे छी रेगुलर बेसिस रे आज थारो टेलीग्राम चैनल ही म अपलोड करि देबे. ओके. 20 नंबर एब्सोल्युटली ए करेक्ट आंसर, फ्लेक्सिबिलिटी. ओके. ता पिला माने क्लास आउरी बहुत सारा थिले मध्य मु एठी क्लास टा को एंड ऑफ करूची. देखा हवा कालीर क्लास रे. सोदिले सोदिबो टिके पछरे सोदिबो, ये मुहरे कहि दोची काहे ना अन्य माने कमेंट को इग्नोर करंदी एंड मु कमेंट रे देखिगिरी बकी दोची. तो ठीक अच्छे पिला माने, तो क्लास को एठी एंड ऑफ करबा. मु जानी छी कि तम माने देखो आम भितर डिफरेंसेस अछि एंड कोन ना
कहीं कहीं जो माने हमें बहुत बेटर क्वेश्चन डिस्कशन कर देलेनी किछि किछि क्वेश्चन हमको इजी लागिवो आउ किछि किछि जण जे नुआ आछनी तांको इजी क्वेश्चन टा भी लागिवो एटा कोन से देखिबे सी कहूचे सी तो मु सी मार देबी सी कहूचे डी तो मु मारी देबी डी तो जो क्वेश्चन भी करूची मु एमते जस्ट कहि दउची काइना क्लास रे भी एटा तुम क्लास लास्ट रे भी कहि परिबो कि मैम लेवल ऑफ क्वेश्चन एया थिला ओके कि मैम क्वेश्चन एटा थिला कि क्वेश्चन सेटा थिला क्लास लास्ट रे कहि परिबो तमरा सजेशन मैटर करे कि मु को भलिया निज को भलो से प्रिपेयर करबी जदी हमें पढौचे कि जदी स्टूडेंट मानक पई मु एठी पढौची इफेक्टिव होनी टीचर को टीचिंग मेथड चेंज करबा दरकार तम फीडबैक ता निहाती भाबरे हेल्पफुल कि तमे माने जो हिसाब रे फीडबैक दबो मु मॉडिफाई करबी काहे ना तम पई ही क्लास ता होची मो पई क्लास हो नाही तो सही जिनस पिला माने तमे कुह किंतु मो कहबा कथा जोटा लागुची क्लास लास्ट रे क्लास मझी रे कहतबो मु जदी देखि देली मोर गोटे आदत अछि मु सुनेबी तो मु कोन मु कहिबी तो मु कहला पर सेटा पुनी आउ 5 मिनिट नै जिवो गोटे क्वेश्चन डिस्कशन बदले 5 मिनिट नउथुवा पुनी तमे मते कहतु ए मैडम टा एम्ति कहूची तो सही जिनसटा खिटपिट मिच चलथिबो तो ठीक अछि जा भी सजेशन दबार अछि तमे दियो क्वेश्चन भलो नथिला क्वेश्चन भलो थिला आउ टिके भलो हिथै परंता किंतु ए सजेशन ता जते बेले हमें लास्ट रे हमते डिस्कशन कोइछे सेते बेले दियो क्लास मझी रे देली तमे किछि ओटे कहउतबो तमे कमेंट देखि आउ दिटा पिला डिस्ट्रैक्ट होथबे मु होथबी मु जदी दी पद कहउछे पुनी से टाइम जाउची बोरिंग के ये कच होउची काहा को हमकु सुनिबा को प्रवचन भलो लागे नाही आमे पाठ पढिया को आछे आमे पाठ पढिबा लास्ट 5-10 मिनिट्स बा 2 मिनिट्स आमे डिस्कशन करबा कि आज रो क्लास टा एया थिला कि आउ टिके बेटर हेई परथाना तमरा सब प्रकार फीडबैक मो पई निहाते भाबर इंपोर्टेंट तो ठीक अछि पिला माने तो ये ओडिसा B.ED बुक जो माने नुआ अच्छा बा इंटरेस्टेड अच्छा बुक परचेज करी कि 300 समथिंग पडुची त माने बुक परचेज करी पारिबो एवं बुक परचेज करी कि त माने कोन करबो ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी पारिबो एग्जाम आहुरी कम दिन रहिला जो माने B.ED क्लियर कर देछो तो भलो कथा जो माने क्लियर करी ना हो बुक परचेज करी परिबा आडा स्टोर उ ए नंबर रे कॉल करिके यूज कोड YT46 एंड ता सहित तमने बैच रे मध्ये एनरोल करि परिबो पिला माने द्रोण 9.0 फाउंडेशनल बैच बोथ फॉर साइंस एंड आर्ट्स तो जो माने इंटरेस्टेड अछो बैच तो समस्त परचेज करि परिबा नाही काहे ना हमें सबुरी मूल रे धन मन थिले भी धन हमकु टाणी दउथाय तो जो माने इंटरेस्टेड अछो बैच रे परचेज करि परिबो नहले तम मानु गोटे सजेशन जे भी आर्ट्स हो कि साइंस बैकग्राउंड हो पिला माने बुक टी थरे परचेज करके देखो कहीं ना क्वेश्चन केवल नुह के मोर B.ED एग्जाम पई ता थरे जो रीजनिंग क्वेश्चन अछि मते जोठी एग्जाम रे रीजनिंग क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन अछि मते हेल्पफुल हबो मते ओडिया टा हेल्पफुल हबो मते इंग्लिश हेल्पफुल हबो टीचिंग एप्टीट्यूड रो मल्टीपल क्वेश्चन अछि मते हेल्पफुल हबो तो कोन ना एई थ्रू हमें पाइबा केवल गोटे एग्जाम पाई नुह आगो को मु जेते टीचिंग एग्जाम दउची मते जो B.ED बुक टा परचेज करथिबे मते हेल्पफुल हबो से साइंस स्ट्रीम हो कि से आर्ट्स स्ट्रीम हो तम निज निज बैकग्राउंड फाई अपकमिंग तम टीचर एग्जाम पर्यंत तमको बुक टा हेल्पफुल हबो सब सोर्स रे तो पारुछ तो 300 टंका मु तो एमित रे जीबी जदी बाहर चिकन मोमो खाइ देबी मोर 300 टंका पळे मो भलिया जी हेइथिबा आराम से तम माने किनि पारिबो ओके तो थैंक यू एवरीवन क्लास को अटेंड करिबा काली रो क्लास नाही देखा हबा पर दिन 12टा बेले ओके काली क्लास हबो नाही ठीक अछि थैंक यू एवरीवन।